All right, so let's begin. Finally, we have about 40-45 minutes. Break up हो गई है बहुत लंबी वाली. All right. So now we will study for the next 50 minutes. P3 trigonometry में खत्म कर लिया था, right? Did we have any remaining questions from that? सब कुछ हो गया था, right? So we need to start our next topic today, which is functions. Okay, functions आज start करें. We are left with 3 P1 topics. One is functions and the other two are differentiation and integration. We're starting with functions today. All right, now this is something that you also know a bit about from O-levels. आपके पास O-levels में function notation तो at least थी, right? So at least in function notation. And also how to find inverse functions. Remember that? You've done that in O-levels as well. So in the first 15-20 minutes, we are going to try and review some of those concepts that you know about from O-levels. Okay? What are functions, first of all? So let's say we have an equation like this, y equals 2x plus 3. This is a linear equation, right? This is a linear equation. We can also write this in another form. We can say this is f of x equal to 2x plus 3. And what that means is y is replaced by f of x here. So this y is actually a function of x, which is defined like this, 2x plus 3. So y की जगह पे हम यहाँ पे क्या लग सकते हैं? f of x पे लग सकते हैं. Or for that matter, we could use another letter as well, f of x, g of x, h of x. But ये notation आप इस तरह से use कर सकते हैं. इस notation का मतलब क्या होता है? This is a function of x. All right? Now, what does that mean? You input some value of x in this function and it gives you an output. So basically function में क्या हो रहा होता है? आप इसको कोई चीज़ input देते हो, it applies some operation on that input and then gives you an output. Alright, so for instance, इसमें आपने सबसे पहले function notation पढ़ी हुई है. अगर आपके पास f of x equals 2x plus 3 है इस तरह से, let me write that here again, f of x equals 2x plus 3. जो आप पहले इस तरह से लिखते थे, अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन लिखी होती थी, इसमें अगर आप कहते थे, अगर मुझे x की स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट करनी होती, let's say x equals 1, you would say put x equals 1 in that, and then you would get a corresponding value for y. From that you get y equals 2 into 1 plus 3, and the corresponding value of y from that would turn out to be 5. तो अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन दी होती है, आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x डालनी होती है, उसके अंदर आप लिखते थे x equals 1, ये पुट करें, इसके अंदर उसकी corresponding value y आ जाती है. Now, if you were to do the same thing using this function notation, in this case, you would say, inputting x equal to 1 in this function, that is equivalent to saying that we want f of 1. x की जगह पे 1 डाल दें. Alright? That equals 2 into 1 plus 3. तो आपने लेफ्ट साइड पे क्या किया? x की जगह पे 1 डाला, राइट साइड पे जहाँ पे भी x आ रहा था, x की जगह पे आपने 1 डाल दिया. What do you get from that? You get 5 from that. So f of 1 equals 5. In this function, if you give 1 as the input, this function gives you 5 as the output. 5 आपको result दे देता है उसका.
अगर आप x की वैल्यू 1 इनपुट करते हो आपको 5 आउटपुट मिल जाती है. मेक सेंस? तो ये फंक्शन नोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. यू हैव डन दिस इन ओ लेवल्स. अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस. This is a box, let's say, in which you apply some operation. You have x that comes as an input to this function. This function applies some operations. In this case, for instance, whatever input you give to it, this function multiplies that input by 2, and then it adds 3 to that number. And whatever the result turns out to be, it gives that number to you as an output. That output in this case is f of x. Or you would also call that y sometimes, but this is how this function notation works. X आपकी input जाती है, function f कोई operation apply करता है उसके ऊपर. In this case it was multiplying by 2 and then adding 3 after that, और फिर वो जो result आता है वो आपको output दे देता है. That output is f of x. Make sense? Now you know how to find inverse functions. This was one thing that you knew कि notation किस तरह से use करते हैं. दूसरी चीज़ आपको क्या पता है, inverse कैसे निकालते हैं. So let's quickly discuss that as well. Inverse functions. Inverse function क्या होता है? अगर मेरे पास ये है f of x was equal to 2x plus 3. In this function, when I input 1, I get a result that is 5. We just saw that above. If I input 1 in this function, it gives 5 as the output. Now, what would the inverse function do? Inverse function would do the opposite of this. So, जो भी original function करता है, inverse उसका opposite करेगा. So, inverse में क्या होएगा? अगर आप 5 इसके अंदर input करते हो, तो आपको 1 वापस मिल जाएगा. Make sense? So, it does the opposite. f of x अप्लाई करेंगे तो 1 पे 5 दे देगा. इनवर्स क्या करेगा, अगर उसमें 5 आप इनपुट करोगे वो आपको 1 वापस दे देगा. That's what the inverse function is supposed to do. Now, how did you used to find inverse functions? Remember the process? You first used to say, let's represent this thing with another letter. So let's say, let y equals f of x. f of x को y से replace कर देते पहले, right? And then it used to become something like this. Y equals नहीं उधर से तो ऑन है, केबल है. क्या कह रही है? आज जुम्मा है तो क्या क्या चल जाएगा. फ्रीक्वेंसीज नीचे क्या लिखा हुआ था? Okay, so it's back.
Okay, so what was the process that we used to use for finding inverse of a function? If we have a function like this, f of x equals 2x plus 3, what you do first of all is you replace f of x with y. So it becomes y equals 2x plus 3. Alright? So this becomes y equals 2x plus 3. Once you're done with this, the next thing that we do is we say let's make x the subject. That was the second thing that you used to do. Make x the subject. That is going to give you 2x equals y minus 3 and x equals y minus 3 over 2. And then, what do we do after this? Y. Change y to x. Make y. Change y to x. Yeah, and write f minus 1. F inverse of x. Okay, is this how all of you have learned it? Yes. Okay, alright. Yes, you can still do that. That's okay. But why do we do this? How does that make any sense? x को सब्जेक्ट तो बना लिया लेकिन उसके बाद इनवर्स कैसे बन गया? इनवर्स कैसे बन गया एकदम ये? Sorry? Why does this convert to this and this converts to this? Because y becomes the input and x becomes the output. You're basically interchanging the variables. Input is becoming the output, output is becoming the input. Basically what happens is, when you suppose this, that let y equals f of x, this implies that x is equal to f inverse of y. How does that work? अगर ये f दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये f inverse हो जाएगा वहाँ पे. So if you input x in the function, it gives you y as the output. Inverse को क्या करना चाहिए? Inverse के अंदर अगर आप y input करोगे तो इसको x output देनी चाहिए, right? So basically जो हम assumption लेते हैं start में, y equals f of x, this implies that x equals f inverse of y. End पे जब हम इस step पे आते हैं, जब हम इसको लिख देते हैं x equals y minus 3 over 2, इसके बाद असल में हो ये रहा होता है कि आप कहते हो x की जगह पे आप वापस वो डाल दो f inverse of y that equals y minus 3 over 2. x की जगह पे आप ये चीज डाल रहे होते हो बेसिकली. ओके, और अब ये y की टर्म्स में लिखा हुआ है फंक्शन, इसको बस आप x की टर्म्स में कह देते हो, y की जगह पे x डाल देते हो, बिकॉज अगर आपने y इनपुट किया तो आपको y minus 3 over 2 दे रहा है, अगर आप x इनपुट करोगे तो आपको x minus 3 over 2 देगा. This is how the actual thing works, all right? But it's okay, you can still skip these steps. ये जो आप ये step है और ये step है, you can still skip it. It's not necessary for you to show it. Show these two steps. आप उसी तरह कर सकते हैं, इस आपने सीखा हुआ है. That works. इसमें कोई मसला नहीं है. Yes. Any method where do we have to use the y value substitution? No, so you don't have to. Do you mean this substitution? Yeah. Yes, this you have to use. Otherwise, how will you do it without it? इसके बगैर क्या करेंगे? फिर तो प्रोसेस में कुछ भी शो नहीं करेंगे. फिर क्या डायरेक्टली बस इनवर्स लगता है? नहीं, इनवर्स का प्रोसेस करेंगे. क्या प्रोसेस करेंगे उसके बगैर? So let's start with this. F of x equals 2x plus 3. How do you start? You swap x and f of x, and then in the end you turn f of x into f inverse of x. Okay, you swap this and this. So that's x equals 2f of x plus 3. Make f of x the subject. Like that. Okay. Yeah, so essentially you're doing the same thing. You're interchanging the variables right now. That becomes x minus 3 over 2. That's okay. And then f of x becomes f inverse of x. Okay, all right. That's okay. That's it. That's it. All right. Is this okay? Any problem with this? अच्छा, now this is for linear functions. We will learn later how to do it for other types of functions as well. आपने सिर्फ linear functions के लिए किया हुआ है O levels में. This is how it works for linear functions. आपने करना क्या है? आपने वही steps use करने हैं जो आप O levels में कर रहे थे. That's going to be okay. It's not necessary to show this particular step or this particular step, but that's basically the actual logic. That's why it works like this.
ओके आपने करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होएगा, लेट्स से यू हैव f of x equals x minus 3 over 2. If you had to find inverse of this function, what would you do? You would start with replacing f of x with another thing. Let's say y equals f of x. Now this gives you y equal to x minus 3 over 2. Make x the subject. That is going to give you 2y plus 3. And then you just replace x with f inverse of x and y with x. You'll get this thing. ठीक है, सो वो जो ऊपर इन्वर्स था देखें, अगर हम इससे स्टार्ट करें, इसका इन्वर्स निकालें, x माइनस 3 over 2 का इन्वर्स निकालें, तो वापस आपको क्या होएगा, वो जो ओरिजिनल फंक्शन हमने स्टार्ट किया था जिससे, वही मिल जाएगा. दिस इज 2x plus 3. तो अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन ये होता, इसका इन्वर्स आपको वो मिलता जो हमारे पास पिछली एग्जाम्पल के अंदर ओरिजिनल फंक्शन था. मेक सेंस? तो एक फंक्शन का जो इन्वर्स है, अगर आप इन्वर्स का इन्वर्स निकालोगे, आपको वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है. बट दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क. आपने दो चीज़ें करनी है, इनफैक्ट तीन चीज़ें करनी है. y की जगह पे f of x की जगह पे y लिखना है. सबसे पहले x को सब्जेक्ट बना देना है. जब x सब्जेक्ट बन गया, यू जस्ट डू दिस कन्वर्जन. x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिख दें, y की जगह पे आप यहाँ पे x लिख दें, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द इनवर्स. मेक सेंस? Any problem with this? Or if you remember this from O levels? Alright, now let me copy this from somewhere as well, the steps that you have, so that you have them in notes. Functions. ओके, सो ये तीन चीज़ें आप कर रहे होंगे टू फाइंड इनवर्स. ओके, ओ लेवल्स में आपने फंक्शंस में बस यही किया हुआ है. दैट्स ऑल दैट यू हैव डन, राइट? इससे ज़्यादा कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं थी उसके अंदर. बट नाउ देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव इन ए लेवल्स, एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1. इसके कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इतना मुश्किल नहीं है, बट इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं दे आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. Now the next thing that you need to know about functions is this terminology that you have, domain and range of functions. Domain and range of functions. ये दो terminologies आपके पास यूज होती हैं functions के अंदर. Domain means the set of values of x that the function can take as an input. Domain is the set of values of x that the function can take as an input. आप function के अंदर input कर सकते हो. The other thing is range, and that is the set of values of y, or you can say f of x, that the function can give as output. Now you can just remember, domain is the set of values of x, right? x की जो range है, जो भी interval है जिसके लिए वो function defined है, that's called the domain of the function. And the set of values of y, that is the range of the function.
मेक सेंस? x की वैल्यूज जो होती हैं उनको डोमेन कहते हैं, जो y की वैल्यूज होती हैं उनको रेंज कहते हैं. ठीक है. नाउ यू नीड टू नो अबाउट डोमेन ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ फंक्शंस, लेकिन ज़्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी अबाउट रेंज. आपको डोमेन दी होगी किसी फंक्शन की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उस फंक्शन की रेंज निकालनी होगी. आपको x की वैल्यूज़ दी होंगी, x की पॉसिबल वैल्यूज़, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपने y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी होगी. Make sense? Let's take a few examples for domain. First of all, there's some function that you need to know about as far as the domain is concerned. Let's say you have a function f of x equals 2x plus 3. This is the same function that we were looking at earlier, 2x plus 3. It's a linear function. इसमें x की वैल्यूज आप क्या इनपुट कर सकते हो? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज ऑफ x? आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर? विल द फंक्शन बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू? यस, राइट. इसमें कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, यू विल गेट एन आउटपुट. x की जो मर्जी वैल्यू आप सोचें तो आप इसमें इनपुट करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इस तरह के फंक्शन में कभी कभी इसने लिखा होगा इस तरह से x belongs to R. Remember this notation? ये जो E की तरह लग रहा है, लग रहा है, इसका क्या मतलब होता है? Belongs to R. What does R mean? R का क्या मतलब होता है? Range. R का क्या मतलब होता है? इस तरह से जो R लिखा होता था, real numbers, right? R represents real numbers. इसका मतलब है X is any real number. X can be any real number. इसकी रेंज भी ऐसी होगी. रेंज के हम बाद में बात करते हैं. इसके डोमेन पे कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस फंक्शन में, तो आपको ये इस नोटेशन का पता होना चाहिए. X belongs to R, or you can say X is any real number. यहाँ पे X की कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, you will get some output for that. इसके अंदर डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस फंक्शन के अंदर itself. Okay? But now if we had a different function, if we had a function like this, let's say, if we had f of x, or let's change the name of the function, let's say this is g of x, and that is 2 over x minus 3. What about this function now? Can you input any value in this function? Is there any restriction in this? कोई भी क्या नहीं कर सकते? 3 नहीं कर सकते? 3 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा. So even though you can input any other value of x, there is one restriction, and that is you can't input x equal to 3, because उससे क्या होता है? डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. तो आप देखना डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होता है? डिनोमिनेटर 0 होता है जब x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी, एंड दैट गिव्स यू x इक्वल टू 3. सो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो अक्सर इस तरह से लिखी होगी, x belongs to R, but there's an exception, and that exception is that x is not equal to 3. So it could be any real value except x equals 3. Make sense? Yes. This is another type of function that you should know about. कि जब आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन हो, यानी जहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा हो, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है? Any problem with this? Let's take another example. Let's take another function. Let's call this function h of x. And let's say this is defined as 2 into 3x minus 6, and then you have a square root on top of that. Now, can you input any value of x in this? Is there any restriction? उससे क्या फर्क पड़ता है? 0 होने से क्या मसला? Have a number that will make it negative. You have a square root function. Square root function की क्या limitation होती है? You cannot input a negative number inside it, right?
आप क्या कहोगे इसके अंदर, जो इसके अंदर वाला पार्ट है 3x माइनस सिक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन Zero. और इक्वल टू जीरो. जीरो के इक्वल भी हो जाए उसमें मसला नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, राइट? सो 3x माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. Square root of 3x minus 6 should be greater than or equal to 0. That gives you x greater than or equal to what? 6 over 3, which is 2. तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? x greater than or equal to 2. So these are some functions. In fact, these two are functions which have a limitation कि इनमें ये x की वैल्यूज़ नहीं आ सकती. तो ये दो लिमिटेशंस का आपको पता होना चाहिए एज फार एज डोमेन इज कंसर्न. डोमेन के बारे में और आपको कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है. फंक्शन में दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस का पता होना चाहिए. जब डिनोमिनेटर में x आ जाए, इसका मतलब है जो भी डिनोमिनेटर होगा वो पूरा का पूरा जीरो नहीं हो सकता. उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लेंगे क्या x की वैल्यू आती है. तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल x कैन नॉट बी इक्वल टू 3. इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू हैव अ स्क्वायर रूट फंक्शन. Square root के अंदर you cannot have a negative number, so you say the part inside the square root should either be greater than or equal to 0. उससे आपके पास जो भी x की वैल्यू आती है, that is the domain, that's x greater than or equal to 2 in this case. Make sense? Now, most of the problems are going to be about range instead. आपको क्या होगा, डोमेन गिवन होगी, उसने डोमेन बताई होगी, आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज फिगर आउट करनी होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन फिगर आउट करनी होगी. ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. सो नाउ वी हैव रेंज ऑफ फंक्शंस. रेंज में वी आर फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लीनियर फंक्शंस. And as we will later figure out, this method that we are going to do here is going to be valid for any one-to-one function. अब ये one-to-one function क्या होते हैं बाद में जाके देखेंगे. But keep this in mind. I'll refer back to this when we discuss one-to-one functions. For any one-to-one function. So first of all, we're talking about linear functions or any one-to-one functions. One-to-one function क्या होता है हम बाद में जाके देखेंगे. Let's take an example of a linear function first of all. Let's say we have this function f of x equals minus 4x plus 1, and we are given that the domain of this function is x greater than 2. We're given this domain. अच्छा देखिए, ऊपर हमने देखा था कि इस तरह के लीनियर फंक्शन में तो कोई भी आप इनपुट कर सकते हैं. बट अब क्या होता है, अक्सर प्रैक्टिकली ना कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं जो आपको क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई भी लिमिटेशन होगी ना जो हमें यहाँ पे डिस्कस की है, डोमेन पे कोई और रिस्ट्रिक्शन होगी, दे विल ऑलवेज टेल यू इन द क्वेश्चन व्हाई कैन. सो ये तो फंक्शन की अपनी लिमिटेशन है. 2 और x माइनस 3 फंक्शन है, इसके अंदर x की वैल्यू 3 आप इनपुट कर ही नहीं सकते हो. जो दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट, इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट ही नहीं कर सकते हो. बट कभी कभी क्या होता है, फंक्शन मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है उसकी लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन कोई प्रैक्टिकल रीजन होती है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द इनपुट वैल्यूज. फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है लेट्स से जिसमें y और x रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन x रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से प्राइस ऑफ समथिंग. नाउ प्राइस ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? इन मोस्ट सिचुएशंस, कभी कभी हो भी सकती है, but price of something in general can not be negative. Okay? तो x की यहाँ पे restriction होगी that it would be greater than 0. Alright? Zero का मतलब होगा you're giving that for free. Negative का मतलब होगा आप कह रहे हैं पैसे ले ले मेरे से और ये चीज़ ले ले मेरे से. That also has happened recently. COVID के टाइम पे oil had a negative price during COVID. जो अभी 270 पे पहुँच गया हमारा, पाकिस्तान में नहीं, जहाँ पे बेसिकली क्रूड ऑयल जहाँ पे वो निकाल रहे थे उनके पास स्टोरेज स्पेस नहीं थी कहीं पे, सो दे कुड नॉट स्पिल इट. उसके उनको फाइन्स पड़ते ऑफ कोर्स. तो दे वर लाइक ये कोई ख़रीद ले हमारे से और पैसे ले ले हमारे से. सो इट वाज नेगेटिव, ऑयल प्राइस नेगेटिव थी. बट इन जनरल दैट डज नॉट हैपन.
प्राइस की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, राइट? सो कोई ना कोई इसकी प्रैक्टिकल रीजन हो सकती है कि वो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, दिस फंक्शन डज नॉट हैव एन इनहेरेंट लिमिटेशन -4x+1. इसमें मैथमेटिकल रीजन तो कोई नहीं है इसमें x की वैल्यू 2 से छोटी ना होने की, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से उसने डोमेन कह दिया कि x greater than 2 है. Now that will be given. इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. It's given that this function can only take x greater than 2. Okay. Now corresponding to this, what is the range of the function? Range का मतलब है values of y. इसके corresponding y की values क्या हो सकती हैं? अब इसमें क्या करेंगे? One idea could be, which Laiba just suggested. She's saying, आप ये 2 इनपुट कर दें इसके अंदर. 2 पे देख लें क्या होता है. 2 पे क्या वैल्यू आती है? -4 into 2 plus 1. When x equals 2, the value of y that you get is -7. And then you could say that y is greater than -7. But if you do that, that would be wrong. There's something wrong with it. So this is fine. हमने 2 पे चेक कर लिया, उसकी -7 वैल्यू आती है. That is okay. But how do we decide y के साथ अब ये greater than साइन आएगा and less than साइन आएगा? Is it greater than -7? रेंज क्या होगी इसकी? ग्रेटर नहीं होगा तो लेस देन होगा, लेकिन क्यों होगा? ओके, सो दैट्स वन आइडिया. अब 3 इनपुट करके चेक कर लिया, उससे x से और ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज आती हैं. सो बेसिकली व्हाट यू डू फॉर फाइंडिंग रेंज जनरली इज यू थिंक ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ग्राफ का सोचें, ग्राफ कैसा लगता है फंक्शन का, एंड देन थिंक अबाउट द रेंज. इट्स अ लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन के ग्राफ्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइंस होते हैं. लेट्स ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर ऑन द साइड. इसका जो ग्राफ होएगा ये अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है? नेगेटिव ग्रेडियंट है. इस तरह की लाइन बन रही होगी कोई, राइट? नाउ व्हाट वी नो इज वी नो वन पॉइंट ऑन दिस ग्राफ जो हमने अभी फाइंड किया है. एक्स की वैल्यू जहां पे 2 है, हमने 2 पे फाइंड कर लिया कि पॉइंट क्या है? -7. सो दिस पॉइंट लेट्स से इज हियर. इट्स 2 and -7. ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. अब जो उसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसने कहा है x greater than 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सो अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें, दिस इज वेयर 2 इज कमिंग, लेट्स से. ओके, ऑल्दो ये x एक्सिस के ऊपर होएगा. चलो ऊपर बना देते हैं इसको. यहां पे 2 आ रहा है. इट सेज x greater than 2. इस ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट रेलेवेंट है? ग्रेटर देन 2 मीन्स राइट साइड पे. तो ग्राफ पे ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है. तो अगर आप y एक्सिस पे देखोगे, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y दैट यू कैन हैव फॉर दिस फंक्शन? इट्स एनीथिंग दैट इज लेस देन -7. ये -7 है. -7 से नीचे आप हो सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो. So that's why the range of this function is going to be y less than -7. That's the range of this function. Does that make sense? Yes. x की वैल्यूज क्योंकि 2 के राइट साइड पे वैलिड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कौन सी आती है? यहाँ पे आप -7 से नीचे हो, ऊपर नहीं. आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि डोमेन में ग्रेटर देन साइन लगा हुआ तो यहाँ भी ग्रेटर देन लगा दें. You have to think about the shape of the graph. It's downward sloping. तो उसके राइट साइड पे y की वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही होंगी. Make sense? Remember what the definition of range is? Set of values of y that the function can take. y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो ग्राफ पे देखें, y की मैक्सिमम वैल्यू -7 है और उससे नीचे नीचे पर आप हो सकते हो. But is -7 even a possible value? यहाँ पे तो greater than 2 लिखा हुआ था. Why are we inputting 2 there? 2 तो उसकी डोमेन में है ही नहीं. Doesn't that make you think? नहीं? So
2 क्यों इनपुट किया आपने? 2 तो उसमें है ही नहीं, उसका पार्ट ही नहीं है। तो हम 3 और 4 कर लेते हैं। 3 कर लेते हैं। 3 से क्या आता? -11 -11। तो फिर रेंज क्या होती? फिर से हम अच्छा वाई भी इनपुटिंग 2, वो तो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। because that's where they draw the line कि यहाँ पर क्योंकि उस पॉइंट पे उन्होंने इस पॉइंट पे इश्यू निकाला तो हम इश्यू से निकाला मतलब इस पॉइंट से आगे दैट्स द कट ऑफ पॉइंट, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। हाउ कैन वी इनपुट 2? क्योंकि हमने उसकी corresponding value देखी। उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। तो उसने कहा 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 से बिल्कुल जो बड़ी वैल्यू है दैट इज इंक्लूडेड। सो 2 से बिल्कुल बड़ी वैल्यू क्या हो सकती थी जो आप इनपुट करते हैं? 2.01 2.01, but then what about 2.001? Then what about 2.00001? So you'd have a number that's slightly bigger than 2, that would be like 2.00 and then infinitely many zeros and then 1. You can't write that number. So instead of that, you just use 2. और आप देखते हो 2 की corresponding value क्या होती है, और फिर आप उसी पे कहते हो कि अच्छा 2 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं था इसलिए हम -7 भी इंक्लूड नहीं करें, लेकिन -7 से बिल्कुल जो पास वाली वैल्यू है वो इंक्लूडेड होगी। ऑलराइट, तो आपने पॉइंट वही इनपुट करना है जो आपको दिया होगा, वही चेक कर लोगे, लेकिन क्योंकि उसके साथ इक्वालिटी का साइन नहीं था, आप रेंज में भी इक्वालिटी का साइन नहीं डालोगे। मेक सेंस? तो greater than 2 here does not mean that it's starting from 3. These are continuous numbers. Greater than 2 का मतलब है it's anything even slightly greater than 2. It could be 2.0001 as well. तो आप 3 नहीं इनपुट करोगे, यहाँ पे आप 2 पे ही चेक करोगे। Make sense? Okay, so that's how we find range of this function. Now let's take another example. Let's say now you have another function, and that is denoted by g of x, and that looks like this: minus 2x minus 5, and the domain of this function is x between -1 and 3. What do we do about this now? इसकी रेंज निकालनी है। लीनियर फंक्शंस में या 1-to-1 फंक्शंस में जब बाद में देखेंगे, आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो डोमेन के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, बस आपने उस पर चेक कर लेना क्या होता है डोमेन के एंड पॉइंट्स के ऊपर। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। सिर्फ डोमेन के एंड पॉइंट्स पे चेक कर लें। एंड पॉइंट्स क्या है इस डोमेन के? -1 and 3. So you see what happens at -1. If you input -1 here, you get -2 into -1 minus 5, which is 2 minus 5, and that is -3. If you input 3 in the function, you get -2 into 3 minus 5, which is -11. लीनियर फंक्शंस में आपने सिर्फ क्या करना है, एंड पॉइंट्स चेक कर लेना है। ये एंड पॉइंट्स आ गए आपके, अब जो रेंज होगी वो इन्हीं के दरमियान में होगी। ठीक है, इसमें आपका ग्राफ जो है, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट्स हैं इस केस के अंदर जो आपको ग्राफ पे पता है। One point is, let's say here, this is -1 and -3. Another point is here, this is this is 3 and -11. X axis के ऊपर you're going from -3 from -1 to +3. What about the y axis? Y axis के ऊपर the greatest value that you have in this part of the line is -3 and the smallest value is -11. अब देखें सिर्फ लाइन का ये वाला पार्ट रेलेवेंट है जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, only this part, right? The rest of the line is not relevant for this domain. उसने कहा -1 और 3 के दरम्यान में हो सकती हैं सिर्फ x की वैल्यूज। उसके corresponding what's the range now? It's between -3 and 11, right? तो रेंज आप कैसे लिखेंगे आप? Between -3 and 11, and now you have to think about whether you put the equality sign there or not.
minus 11, sorry. So it's the other way around, in fact. So it would be minus 11 to minus 3. Minus 11 to minus 3. Now, do we put the equality sign with any one of them? Or do we put it with both of them or none of them? Minus 11 के साथ डालेंगे? Minus 11 के साथ डालेंगे? तो आप देखें ओरिजिनल फंक्शन में 3 के साथ इक्वालिटी का साइन था, यानी जो 3 पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 3 है वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड है डोमेन के अंदर, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y है वो भी आपकी रेंज के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो इसके साथ आप इक्वालिटी का साइन डालेंगे, -3 के साथ नहीं डालेंगे। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम -11 to -3। मेक सेंस? तो आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स पे देखना है, ग्राफ का सोच लेना है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव द रेंज ऑफ द फंक्शन। मेक सेंस? That's about linear functions and one-to-one functions. Again, we'll talk about what one-to-one functions are in one of our next few classes. ये तो आसान part हो गया, ठीक है? Now, mostly you would have to deal with quadratic functions. That's the most frequent type of question in which you have to deal with quadratic functions. Now, how do you find range of quadratic functions? Let me write down an example here. Let's say you have a function that looks like this. F of x equals 2x squared minus 16x plus 33. And the domain of this function is x belongs to R. What about the range of this function? What about the range of this function? Any ideas? Any real number? Sir, will we find out the values of x and then input it? कौन सी x की values find करें? Sir, जैसे हम लोग इसे middle में break करते हैं। उससे तो आपको x इंटरसेप्ट मिलता है ना, उसका क्या उसका इससे क्या ताल्लुक है? एडवांस? So graph positive है, means plus 4 तो फिर वो y तो turning point is smile. देखें, इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन। इसमें आप सिर्फ एंड पॉइंट्स नहीं देखते हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है, आपकी एक कर्व है, राइट? देखिए, लीनियर फंक्शन में तो अगर ऑल रियल वैल्यूज होती हैं तो वो वाई एक्सिस में भी ऑल रियल वैल्यूज ही होती हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? मुनीबा, ये कौन सा ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का? मुनीबा इज गोइंग लाइक दिस. This is not how a quadratic function looks like. Quadratic function graph is a U-shaped curve like this. इसमें the waves बन रही थी इतनी सारी. Okay. उसमें दोनों बताइए. एक U and Okay, so this is how the shape of this graph looks like. It's a U-shaped graph. Why? Because the coefficient of x squared is positive, right? So it's a U-shaped graph because of that. अब देखें, y की क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है इस फंक्शन में? y की कोई भी वैल्यू तो नहीं हो सकती है. There is a limit. There is a lower limit to the values of y that you can have here, and that is this turning point. Basically, turning point पे जो y की वैल्यू होगी, आपका ग्राफ उससे ऊपर ऊपर रह रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा. Make sense? Can we find the turning point? Turning point कैसे find करते थे? You could use minus b over 2a, or you could complete the square. दोनों में से आप कुछ भी कर सकते थे. Minus b over 2a is much quicker.
let's use that. X equals minus b over 2 times a. That gives you minus into minus 16 divided by 2 times 2, and that gives you x equal to 4. This is the x coordinate. What about the corresponding y coordinate? We can put it in the equation. Put it back in the equation. That gives you 2 into 4 square minus 16 into 4 plus 33. ये क्या आता है? 1. So the y value turns out to be 1. The turning point is 4 and 1. Right? What about the range of this function now? Range क्या होती है? Values of y. Y axis पे what's the minimum value? Minimum value जो है यहाँ पे y axis पे that is 1. So आप range क्या लिखोगे फिर? Y greater than or equal to 1. 1 भी तो हो सकता है. So it's greater than or equal to 1. That's the range of this function. Make sense? Any problem with this? No problem? अच्छा, let's change this slightly. अभी time नहीं हुआ. अगर next time free हुआ तो वहाँ पे कर लेंगे. Let's use the same function now. Same function here, but now let's restrict the domain a little. Let's say अब आपकी इसकी domain हो गई है from 0 to 6. What about this function now? Zero to 6. इसकी रेंज निकालनी है. How do we do this now? Any ideas? What's the range? अच्छा, how many of you have done add maths? Can I have raise of hands again? I did not pass function. Okay, all right, ठीक. Because I always forget, so I assume Fatima has done it, I assume Huria has done it, because they're performing better than you guys. Why? Okay, all right, yes. ये सब चीजें तो हमने की हैं अभी तक, वो तो आपने एडमिट्स में कवर की हुई हैं. ये आप यूनिवर्सिटी में जाके ये भी कह रहे होंगे आप मेरे बारे में. That basically tells me what you will be saying about me after A-levels. अच्छा. Let's do this. F of x equals 2x square minus 16x plus 33. What's the domain? The domain is from 0 to 6. Okay. Think about this. We'll discuss in the next class. Try to figure this out. Your next class में discuss करेंगे. Okay.